बोल रहे कि तुमने छोड़ा सुशांत को या तुमने जो भी किया. How do you know that? Nobody knows about my thing, you know. Sushant, I'm not blaming here anyone. I think he made his choice very clear. He wanted to go on with his career. He chose his career and he moved on. But for 2.5 years, I was dealing with so many things. क्या होता है कभी-कभी आप जब मुझे ऐसा लगता था कि चुप रहना ज़्यादा सही होता है हर सिचुएशन में. It's okay to be silent, you know. कि ना कुछ आपकी तरफ से गलत जा रहा है ना बाहर जा रहा है. और मैं लोगों के लिए नहीं, मैं अपने रिश्ते के लिए कर रही थी उस टाइम पे कि मुझे नहीं चाहिए था कि मैं कुछ भी बाहर आकर बिकॉज आई एम नॉट समबडी कि मैं अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को बाहर लाकर उसका तमाशा बनाऊं. आई एम नॉट समवन, यू नो मी नैदी. सो यस पीपल मे बी दैट टाइम यू नो आज मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं. आज लोग मुझको आकर बोल रहे हैं कि तुमने छोड़ा सुशांत को या तुमने जो भी किया. हाउ डू यू नो दैट? Nobody knows about my thing, you know. Sushant, I'm not blaming here anyone. I think he made his choice very clear. He wanted to go on with his career. He chose his career and he moved on. But for 2.5 years, I was dealing with so many things. I was not in that state of mind where, you know, I could just work और क्योंकि मैं नहीं हूँ वैसी लड़की कि मैं easily move on करके काम में लग जाऊँ. मैं नहीं थी वैसी नैदी. So you know, for me it was very difficult. But my family stood by me. The way my family supported me, my life was finished, you know. I was just finished. I did not know what to do after that. But I'm not blaming anyone. He chose his ways. But मेरे तरीके अलग थे. मुझे प्यार, emotions, love and all that, you know, I was craving for that thing. And I gave him full right कि चल ये तेरी जिंदगी, you can go on. But then I was battling with something very badly and my family stood by me and I came out very strongly in that. जहाँ मुझे लगा अब सब कुछ खत्म है. But yes, that was a new beginning for me. आज भी वो लगता है. Yes, I was lost completely. I was completely lost. अभी भी मैं सोचती हूँ मुझे बहुत डर लगता है. And I say thank you God मैं उस चीज़ से निकल गई. You know, I literally tell God कि I'm so grateful that I'm out of it. And yeah, I was lost. बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाली हूँ आगे यार. क्योंकि ज़िंदगी जब आपका यू टर्न ले लेती है ना, सडनली सब कुछ सही होता है और सडनली सब खत्म हो जाता है. तो वो पता नहीं होता कि क्या होने वाला है आगे. तो yes, I was lost, but then God has been so kind. उन्होंने मुझे वापस उठाया और बोला walk, and I started walking. And yeah, it was bad. Then I started understanding कि maybe you know this is something which is not good for me. Because I was मतलब मैं ऐसे था कि मैं बेड पे सोती रहती थी. I never used to talk to anyone. ना मैं मम्मी से ना पापा से. मैं सिर्फ अपनी चीज़ों में इतनी इन्वॉल्व थी. मैं माइंड में आपकी इतनी चीज़ें चलती. And आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं उस टाइम कि अब मैं क्या करूँ. You know, maybe I wanted to finish myself. हो सकता है वो thought process तब आपका ऐसा होता है. You know, but then I came out of it very strongly. My family, my friends, they really helped me to come out of it. And I am here today.